मला हाताला मुंग्या, शर्टाचे बटन लावता येत नव्हते. अचानक असं उभं राहिले की एकदम अंधाऱ्यानं पडतंय का काय असं वाटत होतं. तर ते मला डॉक्टर विकास शेवाळ्यांनी सरांचा नंबर दिला. कोणत्या सरांचा? निर्मल पाटील सरांचा. तर त्यांनी हे सर्व चेकिंग केल्यानंतर मला सर्वायकल मायलोपॅथिकचा आजार सांगितला. Hello friends, we will talk about a very challenging case. This case is a 50-year-old male patient with complaints of severe both lower limb and upper limb tingling, numbness and weakness in his hands and legs. Patient has been having these symptoms for a couple of months now, and then he visited me. The diagnosis that was made was a cervical myelopathy due to OPLL, which is a opacified posterior longitudinal ligament. So now I'll explain you what are the findings as seen on the CT and MRI. If you can look here, this is the MRI scan of this patient. So you can see this is the brain, this is the spinal cord, these are the bones, and then these are the discs. If you can see this blackish material that is compressing on the spinal cord, so this is the opacified limb. The calcium deposits accumulate and it sequentially goes on compressing the spinal cord. If you can see here in this cut, the cord is quite significantly compressed, especially on the right side. Now if you turn your attention to the axial cuts, so if you see this is the spinal cord at the top level, there is a significant good space around the cord. You can see the whitish material over here, so that is the CSF. But as you go down, you can see this blackish material compressing on the spinal cord over here. Over here, in fact, the spinal cord has no space at all. So this is a very severe cord compression. Now we did an additional CT scan for this patient. In CT scan, usually the bones are seen. If you can see this ligament, it has completely has a lot of calcium deposits. You can see here it is significantly occluding the spinal canal. So surgery in such patients is quite challenging because in order to have symptomatic relief, the cord must be completely decompressed. Until the compression on the spinal cord is taken out, the patient will never improve. In fact, such patient starts deteriorating with time. So in such patients, we have to take a surgical options. Now surgical options are of two types. Either you go from the front, which is the anterior surgery, or go from the back, which is the posterior surgery. Operating from the front in such a severe cord compression is quite challenging because when you are operating from the front, that is, if you go from here, while removing the mass that is over here, you can inadvertently put pressure on the spinal cord, and thereby symptoms can worsen. In fact, even patients can land up in paralysis. So therefore, after informed decision making, we took a call of doing a posterior surgery. That is, what we did was we removed this piece of bone, that is the ceiling of the spinal cord. That way we never touched the bony material that was in front, and the cord automatically drifted back and was decompressed indirectly. Thereby we avoided any inadvertent complications in the form of paralysis. This case had to be done under strict neuromonitoring control, where a team of neurologists was continuously monitoring the signals arising from the spinal cord. Such special surgeries require a team of efforts from all other staff as well as neurologists, anesthetists, and the nurses. The EMG impulses and the nerve conduction values that were continuously fed into me helped me decide what kind of pressure I can put on the spinal cord while decompressing the spinal cord, thereby avoiding undue excessive pressure and further causing damage to the spine. So the surgery as such was quite prolonged, mainly because of the positioning and setting up of the OT. But subsequently post-surgery, patient has recovered now, and immediately the next day patient was about to walk. He could climb stairs, and patient was discharged home after 3 days.
दिस इज व्हेरी चॅलेंजिंग केस. आज आपण एक नवीन केस बघतोय. त्याच्यामध्ये पेशंट बेसिकली सिव्हिअर कॉर्ड कम्प्रेशन आहे C5, C6 आणि C4, C5 लेवलला. बिकॉज ऑफ दॅट पेशंटला सर्वायकल मायलोपॅथी झाली. या कंडिशनमध्ये पेशंटला जर आपण अनेस्थेशिया पॉईंट ऑफ व्ह्यू बघितलं तर इंट्युबेशन करताना जर आपण पेशंटची नेक मुवमेंट जास्त केली तर पेशंटला सडन पॅरालिसिसचा धोका राहतो. त्यामध्ये आपल्याला अनेस्थेशिया देताना पेशंटला मॅन्युअल स्टेबिलायझेशन करून नेकची अजिबात मुवमेंट न करता इंट्युबेट करावं लागतं. त्यानंतर इंट्रॉप ऑल्सो जेव्हा ऑपरेशन चालू असतं त्यावेळी पेशंटला आपण न्यूरो मॉनिटरिंग करत असतो. त्यामुळं पेशंटचं अनेस्थेशिया पेन मेंटेन करणं आणि पेशंटला न्यूरो मॉनिटरिंग करणं हे एक चॅलेंजिंग टास्क असतं ॲज अ पॉईंट ऑफ अनेस्थेशिया. सर्जरी करताना देखील पेशंटला जरी थोडाफार कॉर्डला धक्का लागला तर पेशंटला सडन पॅरालिसिस होऊ शकतो. त्यामुळं पेशंटला बऱ्यापैकी आपल्याला क्लोज मॉनिटरिंग करावं. तो ये एक न्यूरो मॉनिटरिंग मशीन है. ये न्यूरो मॉनिटरिंग मशीन से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट का मसल मूवमेंट लाइक अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब इंटैक्ट है कि नहीं ड्यूरिंग द सर्जरी. तो पहले कैसा होता था कि जब ये मशीन नहीं हुआ करता था तो हम वेकअप टेस्ट करते थे पेशेंट को इन द मिडल ऑफ द सर्जरी. पेशेंट को बोलते थे हाथ और पैर मूव करने को टू चेक कि उनका हाथ और पैर मूव हो रहा है कि नहीं. बट जब से मशीन आया इसमें वो चीज़ अवॉइड बाईपास कर दिया उसको. तो इसमें बेसिकली हम करते क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं पेशेंट के बॉडी पे पूरा. उनके क्रेनियर पे लगाते हैं और वो लोअर लिम्स और लिम्स पे लगाते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं उसके लोअर लिम्स पे. तो यहाँ पे सर ऑपरेट कर रहे हैं C3 से लेकर C7 लेवल पे. तो हमने सारे वो मसल्स कंसिडर किए जहाँ पे वो C3 से C7 तक जहाँ पे भी नर्व जाके इनोवेट होता है. तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हम उस पेशेंट को करंट पास करते हैं. तो जब भी हम करंट पास करते हैं तो पेशेंट का मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है. वो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे रिकॉर्डिंग के इस पे दिखता है. अगर आप देखेंगे तो ये सारे हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के इमेजेस हैं. तो बेसिकली हर टाइम पे ये सारे रिस्पॉन्सेस आते रहते हैं. इससे पता चलता है कि पेशेंट का कॉर्ड और पेशेंट का रूट दोनों इंटैक्ट है. और इसमें हम मोटर इवोक पोटेंशियल जो मतलब मोटर मूवमेंट अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब और सोमैटो सेंसरी जो हम उसका सेंसरी होता है जैसे टच, पेन, प्रोप्रियोसेप्शन, वो सब जो होता है वो सारे फंक्शन हम मॉनिटर करते हैं इसमें. तो आफ्टर एवरी सर्जिकल स्टेप्स स्क्रू डाला, स्क्रू डाला, आफ्टर एवरी सर्जिकल स्टेप हम इसको स्टिमुलेट करके हम इसको मॉनिटर करते हैं. अगर